So hello everyone, good evening. I hope आपका जो दिन है बहुत अच्छा जा रहा है. And in this session we'll be discussing some of the most important questions which are expected for term 2. The subject is Artificial Intelligence course code 417. But before we start discussing all these questions, please let me know in the chat if my voice is audible to you, if you are able to see this mark on the screen. हम लोग डिस्कस करेंगे आज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो नाउ इसका जो टॉपिक है हम लोगों ने एक्चुअली पूरा रिवाइज ऑलरेडी कर लिया है, बोथ ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन द स्पेशल क्लासेस, बट स्टिल देयर आर सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेफ्ट. हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन. ऑलराइट, सो एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, माय नेम इज आकाश सिंह. मैंने IIT बॉम्बे से अपना ग्रेजुएशन किया है एंड आई हैव आल्सो रिसीव्ड अ डिग्री फ्रॉम IIT हैदराबाद in artificial intelligence. I've been teaching coding for a couple of years now, so that's the reason I've been taking these courses for you guys. So now computer applications course code 165 has been already done on this channel. You can find the playlist. Information technology जो course है उसका भी जो complete content है it has been uploaded as a playlist. And artificial intelligence 417 has been started yesterday onwards. And if at any point of time अगर आपको notes चाहिए, or maybe if you want the schedule, or you just want to get your doubts solved, you can join me in this Telegram group. Now in order to join this group आपको क्या करना है, I hope most of you might be using Chrome या फिर कोई लोग Mozilla यूज करते होंगे. तो आपको सिर्फ उनके वेब ब्राउजर में जाकर ये URL लिख देना, t.me/akashsingh_unacademy, and you will be able to receive notes, the schedule as well as get your doubts solved. ठीक है. So I hope my voice is audible to everyone. We'll be beginning with this session now. Okay. All right. So first of all, for 1 mark questions. Now these are the easier ones. ज़्यादा difficult नहीं है. इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 mark questions and then 4 mark questions. For looking at the first 1 mark question, while working with NLP, what is the meaning of syntax versus semantics? So syntax को हम लोग generally क्या बोलते हैं? They are kind of rules. रूल्स एज आप बोल सकते हो कि आप नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा रहे हो, वर्ब के पहले एडवर्ब बना रहे हो. दोज आर द रूल्स विच यू हैव टू फॉलो इन एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, वट एवर लैंग्वेज दैट यू कैन गेट. एंड सेमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग, राइट. सो आपको ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं जिससे आप पूरा आंसर लिख पाओ. द आंसर कैन बी लाइक दिस. द सिंटैक्स रेफर टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस which refers to the rules, how your sentence is actually created in English language. Semantics refers to the meaning of the sentence. Alright, so this was the first question and I think this is the most important question जो आपको पूछा जा सकता है. From every part, we'll be discussing about 3 or 4 questions. From 1 mark question as well as 2 mark questions. But जो 4 mark के question है हम लोग सिर्फ 2 ही discuss करेंगे which are very important. If you want more questions like these, you can join me in the Unacademy community. My name is Aakash Singh. आपको प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा in the description of this video. All right. So second 1 mark question, which can be asked, is what is the difference between stemming and lemmatization? Now जो हम लोगों ने अपने revision session में पढ़ा है, जो theory session में पढ़ा है, stemming और lemmatization के बीच में one basic difference is कि stemming थोड़ा inaccurate होता है, क्योंकि आपका जो फाइनल वर्ड है हो सकता है उसका मीनिंग ना बने, राइट. स्टेमिंग में हम लोग सिर्फ सफिक्सेस निकालते हैं. बट इन लेमेटाइजेशन व्हाट वी ट्राई टू डू इज जो भी वर्ड फाइनली बने दैट वर्ड इज एक्चुअली मीनिंगफुल. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जब हम लोग पाइथन कोड रन करते हैं फॉर बोथ स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, दिस इज अ वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, whereas this is a slow execution. Okay, so this is the second 1 mark question which you can expect. Looking at the next question, what is meant by a dictionary in NLP? हम लोग डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, आपका नॉर्मल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे हैं. नाउ लेट्स से कि वी हैव डॉक्यूमेंट 1, वी हैव डॉक्यूमेंट 2 एंड वी हैव डॉक्यूमेंट 3. सो हो सकता है डॉक्यूमेंट 1 में 4 वर्ड्स हों, डॉक्यूमेंट 2 में 3 वर्ड्स हों, डॉक्यूमेंट 3 में 5 वर्ड्स हों, राइट. तो हम लोग इन टोटल वर्ड्स में से जो सबसे यूनिक वर्ड्स हैं उनसे एक डिक्शनरी बनाते हैं, कि जो भी वर्ड्स यूनिकली यूज हुए हैं हम लोग एक जगह पे लिख कर उसकी एक डिक्शनरी बनाई जाती है.
So basic definition would be list of all the unique words which are occurring in the corpus. Corpus क्या होता है? Corpus is the collection of all the documents. This is the corpus. So in this corpus अगर हो सकता है कोई कोई word repeat हो रहा हो, right? हो सकता है definitely अगर आप words use कर रहे हो like a, an या the, हो सकता है ये words repeat हो रहे हो. But in the dictionary you will just write these words only one time. ठीक है? So this would be a better definition of dictionary in natural language processing. This is the next question, which is asking you what is the document vector table. Now this is kind of very important. डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल कहाँ बनाया जाता है? आपका जो बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम हम लोगों ने देखा है. नाउ देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनएलपी. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिदम, राइट? सो हम लोग कैसे बनाते हैं एक डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल? सो इट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने पूरे डिक्शनरी के सारे वर्ड्स फर्स्ट रो में लिख दिया, राइट? दिस इज वन वर्ड एंड सो ऑन. तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रेफर करते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट को. जैसे हम लोगों के पास 3 डॉक्यूमेंट है, इफ यू रिमेंबर, वी आर रेफरिंग टू द फर्स्ट डॉक्यूमेंट. हम लोग देखते हैं कि उस फर्स्ट डॉक्यूमेंट में कौन कौन से वर्ड्स अवेलेबल हैं एंड कौन से वर्ड्स अवेलेबल नहीं है. सो अगर कोई वर्ड अवेलेबल है हम लोग उसको 1 मार्क कर देते हैं, लाइक दिस. जैसे हमारा जो वेक्टर टेबल है उसमें ये सब वर्ड्स हैं हमारे फर्स्ट डॉक्यूमेंट में, बट ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल इन द फर्स्ट डॉक्यूमेंट. तो हम लोग उन सबको 0 मार्क कर देंगे, राइट? यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस सिमिलरली फॉर डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट 3, right? So what you have to mention while answering this question is that the header row contains the vocabulary or maybe the dictionary of the entire corpus. So we are talking about this part. And after that, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड अवेलेबल है हम लोग उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, and if it's not there we can just represent it using 0. Okay, so I hope this is understandable. Okay, so next question which you can expect is a 2 mark question. हम लोगों ने most important 1 mark question कर लिया. Having a look at this, so now ये question काफी लोगों के प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरलीज में पूछा गया है. This is one of the most important questions. Just do one thing, you just can take a screenshot of this slide because I am 95% sure that ये आपके एग्जाम में आने वाला है. ठीक है, so the basic difference between a script bot and a smart bot is script bot is actually very easy to make. आपको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है. However, smart bots are difficult to make. Now, because of this reason, smart bots are actually very powerful. Whereas script bot का जो फंक्शन है काफ़ी लिमिटेड होता है, they are kind of weak. They just follow a script. That is the reason they're called script bots. ठीक है, तो आप ये एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हो इन योर आंसरिंग बुक. नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग. दिस इज योर अनदर 2 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, हम लोगों को क्या बताना है? मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड एंड परफेक्ट सिंटैक्स, नो मीनिंग. So let's talk about multiple meanings of a word. So using an example I can say this is sentence 1. And this is sentence 2. Now यहाँ पर जो red का meaning है that is different in both the places. So जब आपको ये example देने को बोला जाए आप definitely कोई ना कोई example दे सकते हो because it's just English language. Perfect syntax, no meaning. Now you can say something like this, that
नाउ इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस, इट इज परफेक्टली करेक्ट अगर हम लोग ग्रामर देखेंगे, जो अगर हम लोग रूल देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, द ऑप्शन बी इज एग्जैक्टली राइट, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट अगर आप ध्यान से देखोगे देर इज नो मीनिंग एज वेल. So this would be a perfect example of perfect syntax and no meaning. All right, so welcome Riddhi. I hope these things are understandable to you. Okay, so next 2 mark question can be like defining the difference between stemming versus lemmatization. ये हम लोगों ने 1 mark question में भी देखा था. आप कैसे लिख सकते हो as a 2 mark question is stemming is just rule based. इसका मतलब है it directly removes all these words, all these extensions from any word. It does not check कि अगर आपका meaning बन रहा है या नहीं, या फिर कुछ meaningful word आना चाहिए finally. It does not check that. It just follows a rule which will remove all these extensions. Right? That is the reason it might not give you meaningful words at the end. ठीक है, so ये आपका stemming का definition हो सकता है. Lemmatization is actually very organized and it is a step-by-step procedure so that आपका जो वर्ड है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे एंड आपका जो ग्रामर है वो भी करेक्ट रहे. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. तो इफ दिस वर्ड केयरिंग, मैं इस पे स्टेमिंग परफॉर्म करूंगा एंड इस पे मैं लेमेटाइजेशन परफॉर्म करूंगा. एस स्टैंड्स फॉर स्टेमिंग एंड एल स्टैंड्स फॉर लेमेटाइजेशन. सो कैन यू आंसर व्हाट विल द आंसर बी? तो अगर मैं स्टेमिंग यूज करूं तो इट माइट बिकम समथिंग लाइक दिस, बट दिस इज एंटायरली अनरिलेटेबल टू द ओरिजिनल वर्ड, राइट? तो इसके बाद हम लोग अगर लेमेटाइजेशन यूज करेंगे, जो आपको वर्ड मिलेगा, it will be the original root word care. So this is the basic difference between stemming as well as lemmatization. All right, so let's have a look at the next one. Which word in a corpus have the highest values? Which ones have the least? So now I have discussed in my sessions. This is also a very important question. Actually, all of the questions are quite important, but kuch important questions maybe there is some priority list. So please expect this question to come. ये आपको पूछ रहा है कि in a corpus or a collection of documents आप कैसे define करते हो कि कौन से word का valuable चीज है वो कितना है. So it is defined by the occurrence. So let's look at the stop words, the frequent words and the rare words. अगर आप देखोगे कोई वर्ड बहुत ज़्यादा बार यूटिलाइज होता है तो उसकी जो वैल्यूबिलिटी है वो बहुत कम होती है, राइट? सो दिस इज द वैल्यूएबल एक्सेस एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी. तो स्टॉप वर्ड्स लाइक ए एंड द, राइट? सिमिलरली जैसे जैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी वैसे ही आपका जो वैल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होता है. So this is the graph which you can construct to explain your question. Looking at the next question, does the vocabulary of a corpus remain the same before and after text normalization? So let's talk about a document. हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग इसका vocabulary निकालते हैं और मे बी we construct a dictionary. Now what the question is asking you, once you have done the text processing, आपने text normalization कर दिया, you will again get these 4 documents and you can create dictionary again. आप फिर से dictionary create कर सकते हो. So the question is asking you, will these two be the same? The answer is no, because आपके stop words निकाल दिए जाते हैं, special characters निकाल दिए जाते हैं, numbers भी निकाल दिए जाते हैं. That is the reason these two documents are entirely different. Similarly आपकी जो affixes है, अगर आप stemming करोगे, अगर आप lemmatization करोगे, the words will change. So these two are not same. So हम लोगों ने 1 mark question कर लिया, हम लोगों ने 2 marks question कर लिया. Now we can look at the 4 mark questions. The first question is create a document vector जिसका हम लोगों को टेबल बनाना है for the given corpus. We have given document 1, 2, 3 and 4. Very simply document vector का मतलब क्या होता है, आपको सारी vocabulary लिखनी है first of all.
राइट, वोकैबुलरी इज एक्चुअली द फर्स्ट रो। ठीक है, एक बार आपने लिख दिया तो आप डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4 के लिए रोज बनाओगे। वी आर गोइंग टू मुंबई, ठीक है, सो आपका 1 यहाँ पर आ गया, वी आर गोइंग टू मुंबई, सो हर जगह 1 आया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर नॉट प्रेजेंट, so you can mark all of them 0. Similarly, document 2, Mumbai is a famous place. So Mumbai 1 is a famous place. Right? हमारा document 2 का भी vector row बन गया. Document 3 के लिए we are going to a famous place. We are going to a famous place. Right? So in the similar fashion आप पूरा एक document vector create कर सकते हो. You can practice a few more questions from your textbooks, but अगर आपको और questions practice करना है, you can join the community on Unacademy. My name is Aakash Singh. You can find the profile link in the description of this video and आप वहाँ की community join कर सकते हो, where I've already shared the entire PDF of the most important questions. All right. Next question is, classify each of the images according to how well the model's output matches the data samples. I think we have done this question in the special class today. So यहाँ पर आपका जो blue line है, the blue line stands for actual values right. Now if you look at this one, अगर आप देखोगे it is not accurate, right? सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे मैच हो रहा है एंड बाकी तो वैल्यूज है वो जरा भी मैच नहीं कर रही है, so you can say this is also underfitting. For the theory sessions you can refer to the NLP session which was conducted yesterday. This one is actually again not accurate, even though आपके सारे data points fixed है. The reason it is not accurate is, let's look at this part, right? There is a very various difference कि ये कुछ match नहीं हो रहा है. The value should have been somewhere here, but instead using this model आपका जो prediction है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है, so it is also not accurate. You can say this is overfitting. आपने ट्राई किया है कि आपके सारे पॉइंट्स फिट हो जाए ग्राफ में, एंड द लास्ट वन इज एक्यूरेट. द रीजन इट इज एक्यूरेट कि आपके सारे डेटा पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, एंड दिस मीन्स इट इज अ परफेक्ट फिट. ऑलराइट, सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम लोग अपकमिंग क्वेश्चन देखते हैं. थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, calculate the TFIDF for the given corpus and mention the words having highest value. So what is the first thing which we do? We create the vector table, right? Vector table create करने के लिए हमको डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पर ये सारे वर्ड्स लिखे होंगे इन द फर्स्ट रो, राइट? फिर हम लोग डॉक्यूमेंट 1 के लिए एक रो बनाएंगे, राइट? हम लोगों ने सबके लिए रो बनाई, फिर भी अलॉट 0 1 0 1, देन फाइनली इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी वी जस्ट ऐड देम. ठीक है, आई होप दिस वाज अंडरस्टूड. हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इट इज दिस फॉर्मूला. आई थिंक यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस फॉर्मूला अ कपल ऑफ टाइम्स. मैंने स्पेशल क्लास ली थी ऑन अनअकैडमी फॉर NLP where we have practiced a question which is related to the same. ठीक है, एज आई वाज डिस्कसिंग कि हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाना पड़ेगा. आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट द सम. सो इन योर CBSE क्वेश्चन बैंक दिस क्वेश्चन हैज बीन एक्चुअली गिवन रॉन्ग. आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो थोड़ा गलत दिया गया. द करेक्ट वे वुड बी, so first of all हम लोग टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई टर्म फ्रीक्वेंसी वुड बी for the word we, you're talking about 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, something like this. The total number of words will be in the denominator and the number of time it is being repeated will be in the numerator. आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें सिर्फ 2 2 2 लिखा गया. they have forgot to mention the denominator.
ठीक है. So after that what we get is something like this. Please remember this is the term frequency. This ये जो आप टेबल देख रहे हो this is not term frequency, this is इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है इसको, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट. ठीक है, हम लोग वी की बात करते हैं. वी की जो टोटल फ्रीक्वेंसी है इट इज अकरिंग 2 टाइम्स, बेसिकली यहाँ पर एंड यहाँ पर, इन डॉक्यूमेंट 1 एज वेल एज डॉक्यूमेंट 2. तो हम लोग डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं. तो इट इज सेम फॉर एवरीथिंग. हम लोग जो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे फॉर आईडीएफ एंड वी विल कैलकुलेट जैसे आर कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है. इट इज कमिंग ओवर हियर एज वेल एज ओवर हियर. डॉक्यूमेंट 1 और 3 में आ रहा है, तो दैट इज वाई 4/2. सिमिलरली वी कैन क्रिएट द एंटायर टेबल. आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वो फॉर्मूला लगाना है जो हम लोगों ने पढ़ा था एंड यू विल बी गुड टू गो. इफ यू नीड प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन, हम लोगों ने एनएलपी पे रिवीजन लिया था आज, यू कैन चेक दैट आउट ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. ओके, सो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. हाउएवर ये सिर्फ कुछ 10 या 11 क्वेश्चंस ही थे. इन टोटल यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस. यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑन अनअकैडमी कम्युनिटी. You can find the link to the community. आपको सबसे पहले मेरी प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा on Unacademy. The link is in the description of this video. ठीक है, so with this we are done with the questions. If you have doubts you can go ahead and ask me now. If you're watching this video after just before your exam, I hope this video helps you a lot. You can still attend the sessions on Unacademy. आपके एग्जाम के 1 वीक पहले तक हम लोग सेशंस लेते रहेंगे, even 1 day before. So you can join me on Unacademy. Just use the code ASK01. Alright, so we look at YouTube as an educational community. हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं Unacademy पे. So on Unacademy we can find out all these batches which are available for class 9 as well as class 10th. Now जब आप ये batches के लिए enroll करते हो, आपके पास option होता है कि आप हिंदी में enroll करो या फिर English batches के लिए. Now these batches are designed in such a manner कि आप crash course कर सकते हो along with the sample paper. ठीक है. तो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर कंफ्यूज कि आपको साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए. अगर आपको वो कंफ्यूजन है या फिर अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है और मे बी यू जस्ट वांट सम डिस्काउंट, यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, राइट. आपको एक करियर काउंसलर अलॉट किया जाएगा जो आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है. आई होप यू यूटिलाइज दिस फीचर. नाउ अनअकैडमी पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आप एनरोल कर सकते हो जिसके लिए. वन इज प्लस and the other one is iconic. Plus और iconic में इतना difference है कि iconic में you will get extra features, जैसे you get mentor, you get a study planner. आपके जो जितने भी live tests होते हैं उनका analysis आपको दिया जाता है. Apart from that you also get PDFs and notes. Now especially for the 10th and 12th CBSE board exams, if you use the code ASK01, आपके 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज आपके जो 10th के बोर्ड एग्जाम्स है वो थोड़े डिले हुए थे. सो यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर योर एंटायर 10th एग्जामिनेशन. ठीक है. अगर आपको थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है, इफ यू आर टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन विच हैज़ 12 और मोर मंथ्स, यू विल गेट 2 months फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ टू अवेल दिस ऑफर यू कैन जस्ट यूज द कोड ASK01. As we were talking about 2 types of offers which are going on in Unacademy. Also, only for today, if you use this code ASK01 instead of the normal 10%, you'll be getting a 20% discount. So the price will be reduced even further. So ये आपका बन जाएगा probably 1000 rupees per month for the plus subscription. Apart from that, 12 months अगर आप ले रहे हो तो 2 months free मिलेंगे. अगर आप 3 months का ले रहे हो आपको 1 month free मिलेगा. सेम गोज फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक की स्पेशल बात क्या है कि आपको इसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, लाइक यू गेट अ मेंटर, राइट. आपको कोडिंग सिखाई जाती है एंड आपको नोट्स भी मिलते हैं. तो फॉर दैट रीजन इट इज़ अ बिट कॉस्टली, बट अगेन दिस कोड ओनली फॉर टुडे विल गिव यू an extra 10% discount. So finally I think this will cost you around 1800 rupees per month for an entire year plus 2 months. Alright, so special classes are there regularly on Unacademy. It looks something like this.
There is absolutely no spamming in the chat. ये chat box होता है. You can ask your doubts. आपका एक live poll session होता है where you can find out the poll leaderboard. Okay, so अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा है या फिर कोई चीज़ नहीं पढ़ानी चाहिए, I hope not, but you can definitely report that to Unacademy using the link in the description of this video. ठीक है? So it was great having you guys. I hope this video helps you a lot whenever you're preparing for artificial intelligence examination. हम लोगों ने NLP के most important questions discuss किए हैं आज. If you want the rest of the questions, you can join my community on Unacademy. You will find the link to my profile in the description of this video. I'll see you in the next one. Till then, keep cracking. Bye-bye.